Hi, this is Himanshu Sinha. I'm part of the product team at Groww Mutual Fund. आज हम बात करेंगे ग्रो निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड के बारे में। ये जो फंड है निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स को ट्रैक करता है। इफ वी टॉक अबाउट दिस इंडेक्स तो दिस इंडेक्स इज एक्चुअली कंपोज्ड ऑफ ऑल 250 स्मॉल कैप कंपनीज and the weightage is on the is on the basis of free float market cap. सो ये सारी 250 कंपनीज को फ्री फ्लोट मार्केट कैप के वेटेज में इन्वेस्ट करता है। अगर आपको स्मॉल कैप्स का एक्सपोजर चाहिए तो मैं आपको बता दूं कि स्मॉल कैप्स दे एक्चुअली टेंड टू बी वॉलेटाइल, राइट? तो देयरफॉर स्टॉक सिलेक्शन एंड इवन एक्टिव फंड सिलेक्शन कैन बी ट्रिकी। तो अगर आपको स्मॉल कैप का एक्सपोजर चाहिए और आप चूज़ नहीं कर पा रहे हो कि आपको कौन सा स्मॉल कैप स्टॉक या फिर कौन सा स्मॉल कैप एक्टिव फंड चूज़ करना है, देन दिस इंडेक्स फंड कैन बी अ गुड स्टार्ट फॉर यू because this gives you exposure to all 250 small cap stocks in one go. इस फंड में आप SIP और लमसम दोनों रूट से इन्वेस्ट कर सकते हैं। द मिनिमम SIP अमाउंट फॉर दिस फंड इज ₹100 per month, and this fund is available on all investment platforms. This is all from my side on Grow Nifty Small Cap 250 Index Fund. Thank you so much. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.